Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to analyze the Hindu newspaper for 6th of April 2021. आज हम 6th April 2021 का the Hindu newspaper analyze करने जा रहे हैं. So also we are going to solve 3 questions at the end of the lecture. Prelims based questions होंगे 3 जो हम lecture के end में solve करेंगे, ठीक है? Today's newspaper is going to be really important because today there have been many analytical articles in the newspaper that we are going to understand. Make sure that you make notes simultaneously in the class. उम्मीद करती हूँ कि आप simultaneously class के साथ साथ notes बनाते जाएंगे ताकि आपको topic अच्छे से समझ आ जाए. Class PDF will be uploaded on our Telegram channel, that is simplifying UPSC with ease. Okay. So before we start this lecture, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched UPSC CSE mega subscription offer, and this subscription offer is going to give you extended subscription on your plus subscription. अगर आप 1 year का plus subscription लेते हो today, that is 6th of April 2021, normally it will be applicable till 6th of April 2022. But here in this mega subscription offer, your subscription will extend till July 2022 till your prelims. जब तक आपका prelims नहीं हो जाता तब तक ये subscription आपका valid रहेगा, ठीक है? Same thing applies to the 2-year course batch also. अगर आप आज लेते हो subscription तो आपका 6/4/2023 तक रहना चाहिए applicable. But इस mega subscription offer में जब तक आपका prelims नहीं हो जाता तब तक आपका subscription valid रहेगा. Okay, and this offer is valid till April 28, 2021. उसके बाद ये offer नहीं मिलेगा. So make sure that you subscribe to Unacademy Plus today. The link is given below in the description box, and you can use code ARPITA10 to get 10% discount as well. ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10% off भी मिल जाएगा आपके Plus के subscription पर अगर आप code use करते हो ARPITA10. Okay, so I've given you the link. Make sure that you apply today because new batches are starting from 7th of April. कल से नए batches start हो रहे हैं, उससे पहले आप अपना subscription फटाफट से ले लीजिएगा. चलो, let's start decoding the newspaper then. The first important article on page 1, Lavrov Jaishankar talks today. Now here there is an important round of discussion which is going on between India and Russia. It will take place today. Now, visiting Russian Foreign Minister Mr. Lavrov and External Affairs Minister of India S. Jaishankar. Now why this meeting is going to take place? They are going to talk about the peace efforts which are going on in Afghanistan. ठीक है, अब रशिया और इंडिया जो है पीस एफर्ट्स पे बात करेंगे. अफगानिस्तान में जो शांति के प्रस्ताव रखा गया है तालिबानीज के साथ और जिसमें यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा. नाउ दिस इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन बाय यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यू पीस initiative plan which Joe Biden has announced. Now it's a regional conference to discuss united approach on Afghanistan, and in this regional conference the foreign ministers of USA, China, India, Pakistan and Iran and Russia are going to participate. That is why here Russia and India's foreign ministers, they are coming together to communicate over the peace talks on Afghanistan. Okay, so let us understand what is there in the proposal which has been kept forward by Joe Biden. Joe Biden ने जो proposal रखा है peace talks का, वो क्या proposal है और उसमें क्या बातें की जाएंगी. Now basically it's a UN-led conference of representatives. Representatives means the foreign ministers. हर country का जो भी इसमें participant है उनके foreign ministers आएंगे जो कि बात करेंगे आपस में, ठीक है, डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल अप्रोच होना चाहिए अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए. एंड इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट टॉक्स बिटवीन अफगान लीडरशिप एंड तालिबान. अफगान के लीडर और तालिबान के लीडर्स के बीच में बात करवाई जाएगी. एंड इट अर्जेस बोथ साइड्स, बोथ तालिबान एंड अफगान, टू रीच अ कंसेंसस ऑन अफगानिस्तान फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्निंग अरेंजमेंट्स. आगे फ्यूचर में किस तरीके की संभावना है रूल करने की, तालिबान और अफगान के लीडरशिप किस तरीके से आगे समझौता करना चाहते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट किस तरीके से लाई जा सकती है, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा होगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो वैसे इन 2020 लास्ट ईयर आल्सो इन फेब 2020 देयर वाज एन अग्रीमेंट साइंड विद द तालिबान बाय यूएस वेयर अमेरिकन ट्रूप्स आर सेट टू लीव अफगानिस्तान बाय May 1. The Taliban and Afghan government started peace talks in Doha in September last year but reached no breakthrough. But right now it is being said that US forces will be deployed. अभी ऐसा बोला जा रहा है कि जो बिडेन कह रहे हैं कि हम US forces को डिप्लॉय करेंगे जब तक हम एक कंसेंसस ना लेकर आए.
है. Until the time we are going to make the peace talks, or we are going to establish peace in Afghanistan, we are going to deploy our troops. Okay. All right. Now what is India's position on Taliban? अब इंडिया का क्या पोजीशन है तालिबान के ऊपर? देखो, this news is important from international relations point of view, that is GS paper 2. Okay, make sure that you identify the subject category also of the news according to the syllabus. So for New Delhi, which has protested being left out of regional formulations in the past, both in the Moscow process also in United Nations April 2026 plus 2 plus 1 also, which included Afghanistan's immediate neighbors, right? So finally now Joe Biden is including India also in this peace talk. That is a relief for us, right? We are also being included in the global टॉक्स. अब ग्लोबल पीस टॉक्स या ग्लोबल जो भी अरेंजमेंट हो रहा है, भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, भारत को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है. ठीक है. प्रीवियसली हमने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था कि हमें तालिबान रिजीम में एड अप नहीं होना, हमें किसी तरीके का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करना. दैट वाज इन 1996. बट नाउ in order to prove our mettle also, in order to make ourselves heard also, we are trying to participate in this consensus talk. ठीक है, point clear? And India supports the Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace process. So we are also going to support Afghanistan's leader, right, in this negotiation. So this was all about this particular article. Now coming on to the next article. The next article is heat wave unlikely for another week. Now this topic is important for GS paper 1 geography. ये topic आपका GS paper 1 geography के लिए important है. ठीक है. Now here what is heat wave? We have to understand that. Now इसमें आर्टिकल में कुछ नहीं समझना, हमें यहाँ पर हीट वेव को पढ़ना है. What is a heat wave? It's a periodic of abnormally high temperature, right? The period of abnormally high temperature, जब बिल्कुल बिना नॉर्मल से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, and that too abnormally, that period is heat wave. More than the normal maximum temperature, it occurs during the summer season, typically between March to June. Right now it is being said that heat wave is not going to take place for another week, but वैसे मार्च से जून के बीच में ये जुलाई तक चलता है heat wave का time period. Okay, now what are the criterias where we can determine that right now heat wave is going on in a state or in a particular period? Indian Meteorological Department has given criteria for determining हीट वेव्स. अब हीट वेव्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए, कैसे डिटरमाइन किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए IMD ने क्राइटेरियाज दिए हैं. फर्स्ट इज दैट हीट वेव नीड नॉट बी कंसिडर्ड टिल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस. जो प्लेन्स रीजन है, हिली रीजन नहीं, जो नॉर्मल प्लेन रीजन है, वहां पर अगर जहां पर माउंटेनियस रीजन नहीं है, वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाए तो हीट वेव माना जाएगा. और हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाए तो वो हीट वेव हो जाएगा. ठीक है. Second, when normal maximum temperature of a station is less than or equal to 40 degrees Celsius, heat wave departure from normal is 5 degrees Celsius to 6 degrees Celsius. And if there is a case of severe heat wave, then that is 7 degrees Celsius or more. Okay. Then when normal maximum temperature of a station is more than 40 degrees Celsius, हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 4 डिग्री टू 5 डिग्री, मतलब इससे 4 से 5 डिग्री ज्यादा. और सिवियर हीट वेव मतलब इससे 6 डिग्री अगर ज्यादा हो जाता है तो वो सिवियर कैटेगरी में आ जाता है. तो आप मेन याद रखना 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स एंड 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन्स. ओके, सो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द हीट वेव्स. Coming on to the next important article, bridging the divide in a polarized part of Assam. So here a bridge tipped to be India's longest has become an unusual issue in a polarized part of Assam, often synonymous with illegal immigrants. Basically here we are talking about, यहाँ पर हम किस ब्रिज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बोगीबील ब्रिज की, which is considered as the largest bridge, right, in the state, longest bridge. तो यहाँ पर आप देखोगे over here we have the बोगीबील ब्रिज, यहाँ पर डिब्रूगढ़ के पास है. ठीक है. Now this bridge is going to cover river ब्रह्मपुत्र between डिब्रूगढ़ and धीमाजी. ये है धीमाजी, ये है डिब्रूगढ़, बीच में आता है ब्रह्मपुत्र river. It is going to span the ब्रह्मपुत्र river between धीमाजी and डिब्रूगढ़ in Assam. Okay, और ये इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है. बेसिकली इट्स अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग. इट इज अ longest bridge ना, तो you can say it is significant when it comes to technology, and it reduces the distance between Assam and Arunachal Pradesh. You have to remember which two states are
इन्वॉल्व किन दो स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस करेगा ये बोगीबील ब्रिज, असम और अरुणाचल प्रदेश. ओके, विच विल एनहांस द ईज ऑफ लिविंग इन दैट रीजन एंड इट इज कंसिडर्ड एज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है ये. ठीक है, 4.94 किलोमीटर लॉन्ग है ये और ये इंडिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है जो आपको याद रखना है. सो ओवर हियर वी हैव अंडरस्टूड दैट बोगीबील ब्रिज इट इज बिल्ट ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर एट बोगीबील. इट इज बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड धीमाजी इन असम and it was approved by Cabinet Committee on Economic Affairs in 1997. 1997 में इसको अप्रूवल मिला था, ये पॉइंट आपको याद रखना है. ओके, एंड द फाउंडेशन स्टोन जो इसकी नींव है वो कब रखी गई थी? इट वाज लेड बाय 2002 बाय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है, उस समय पीएम थे एच डी देवे गौड़ा एंड देन फाइनली इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी. ओके, now the next important article, railways completes arc closure of Chenab bridge, very important for prelims के लिए important है. Chenab bridge is a railway bridge currently under construction in Bakkal and Kauri in Resai district of Jammu and Kashmir. माना जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो आईफल टावर से भी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा ऊंची है. It is crossing in terms of height it is bigger than Eiffel Tower. Okay, and it was announced on March 17, 2021. Right now it is not fully completed, but yes it will be completed by December 21. का जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, and some specifications of Chenab bridge. So the bridge length is 1315 meter and arc span मतलब ये जो ब्रिज का इस आर्क बन रहा है ना, I'll show you the arc also, this much, this one. ओके, ये आर्क है ब्रिज का, दिस इज द आर्क ऑफ द ब्रिज. ठीक है, तो इसका जो स्पैन है वो कुछ 467 मीटर का है एंड आर्क लेंथ इज 480 मीटर. स्पैन मतलब कवरेज एंड लेंथ मीन्स इसकी जो पूरी लंबाई है आर्क की. ओके, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट. एक रेलवे ब्रिज है ये, आपको ये पॉइंट याद रखना है. ओवर हियर वी हैव अंडरस्टूड इट, इट्स अ रेलवे ब्रिज. ओके, now let us solve some questions. Question number 1, consider the following about Agastya-Malla Biosphere Reserve. Reserve is home to Kani tribe from both Tamil Nadu and Kerala. Wildlife sanctuaries Shendurne, Pepara, Nayar are located in it. It constitutes biogeographical hotspot within Western Ghats. It's a part of world's network of biosphere reserves. You have 5 seconds time to answer the question. Correct answer to this question is, it is D. All of the above statements are absolutely correct. सभी statements correct हैं अगस्त्य-मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में. Coming on to the second question. Project Elephant was launched by Government of India in the year 1992 as centrally sponsored scheme with which of the following objectives? To protect elephants, their habitat and corridors, to address issues of man-animal conflict, welfare of captive elephants. Correct answer to this question is, it is again D. All the above statements are absolutely correct. Last question for today. Arrange the following tiger reserves from north to south as you will see them in the map. ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है. पीलीभीत, इंद्रावती, सह्याद्री, सारिस्का. Correct answer to this question is, correct answer is B. First we have सारिस्का. सबसे पहले हमारे पास सारिस्का आता है. Then we have पीलीभीत. Then we have सह्याद्री. And then we have इंद्रावती. ठीक है, सॉरी यहाँ पर इंद्रावती आएगा और यहाँ पर सह्याद्री आएगा. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट. आई होप टुडेज लेक्चर वाज अंडरस्टैंडेबल. आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया and it was fun to understand. Okay, on this note we are wrapping up this class. Also the new batches are starting from 7th of April 2021 from tomorrow. So make sure that you take your subscription today itself. I've given you the links also in the description box below the video. Make sure that you subscribe today and use code Arpita10 to get 10% discount on your plus subscription.